विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I take this opportunity to welcome everyone. So प्रभु जी सभी का धन्यवाद दे रहे हैं कि आप उनको कि आप सबको हरि कथा सुनाने का मौका मिला। I didn't know the topics till I saw the poster yesterday or today. I think is about the mind control. प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको अभी पता चला कि अभी जब पोस्टर देखा कि हमारा आज का टॉपिक है कि मन को कैसे नियंत्रण करें। So I'll try to say something about the mind, and then we'll have some question answer session. प्रभु जी मन के बारे में बताएंगे और फिर बाद में आप लोगों के प्रश्न उत्तर भी लेंगे। मना एव मनुष्यानां कारणं बन्धुमोक्षये. Very powerful statement from the Upanishad. ये उपनिषद से बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली श्लोक है। बंधया विषय संगो मुक्तैर निर्विषयं मना. That the mind is the cause of our bondage and mind is the cause of our liberation. मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। If the mind is controlling us, then the mind is binding us in this world. अगर मन हमें If we are controlling the mind, then the mind plays a very important role for our liberation from the bondage of this world. अगर हम मन के द्वारा नियंत्रित हैं तो मन हमें संसार में बांध कर रखेगा, और अगर हमने मन को नियंत्रण कर लिया तो हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। And Krishna speaks the same thing in the Bhagavad Gita. He describes mind either to be a friend or to be the enemy. भगवान भी गीता में यही बता रहे हैं कि मन शत्रु के रूप में भी काम कर सकता है और मित्र के रूप में भी। It's interesting because the same person could be your enemy and could be your friend. And more interestingly, the mind is so flickering. In a day, 20 times it could be your enemy and one time it could be your friend, or 20 times could be your friend and then 2 times could be your enemy. It changes every single time. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक ही व्यक्ति वो दोनों रोल प्ले करता है। दिन भर में हम देखते हैं कि एक ही मन है, कभी 20 बार वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा तो कुछ एक बार हमारे फेवर में काम करेगा। If you're married and if you have a problem with your wife, or the wife has a problem with you, she can take a break. She can go for a walk, or your husband can go for a walk. You have a problem with your friend, so you say, okay, let's take a break for a few days. Or you have a problem with your manager, you say, okay, I'm going for a japa walk. You can take a break. If you have a problem with your wife, with your son, with your daughter, with your friend, with your authority, you can take a break. But with the mind, you cannot take a break. तो ये अगर हम गृहस्थ हैं तो आपस में अगर पति पत्नी का फाइटिंग हो जाता है तो वो ब्रेक ले लेते हैं। अगर हम मित्र हैं, आपस में फाइटिंग हो गया तो ब्रेक ले लेते हैं। मैनेजमेंट में हैं तो हम जपा वॉक में चले जाते हैं, वी टेक अ ब्रेक। लेकिन जब हम मन के साथ हम ब्रेक नहीं ले सकते।
Because wherever you go, the mind goes with you. जहां भी जाएंगे मन आपके साथ है. Therefore, you have no other option but to make your mind a friend rather than an enemy. इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है. सिर्फ एक ही विकल्प है कि हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा. Because you don't want to live with an enemy. That's very painful. So in a way, you do not have an option. But this option, it's one of the most difficult thing to achieve. तो जाहिर सी बात है, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने शत्रु के साथ रहें, तो क्योंकि ये बहुत ही कष्टदायी है. तो लेकिन मन को मित्र बनाना भी ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम है. Forget about us. Even Arjuna, who was a friend and a devotee of Krishna, extremely powerful. Even he says, my dear Lord, you're talking about controlling the mind. But as far as I am concerned, it is the most difficult thing to do. Chanchalami mana Krishna pramati balabhadra. It's more difficult than controlling the wind. हमारे लिए तो छोड़ो, अर्जुन खुद कह रहे हैं महाभारत में कि मन कितना मुश्किल है मेरे लिए कंट्रोल करना. So when Arjuna says that mind is very, very difficult to control, Krishna is not denying it. तो जब अर्जुन कह रहे हैं कि मन बहुत ही मुश्किल है इसको नियंत्रित कर पाना, तो भगवान कृष्ण उसको मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुश्किल है. He admits, right away he admits that no doubt, asamsayam mahabaho manat durnigrahancha. There is no doubt that controlling the mind is extremely difficult. भगवान ने इसको बिल्कुल तुरंत स्वीकार कर लिया कि मन को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है. But abhyasena tu kunteya vairagyena ch grihyate. It is possible by determination, by practice, by renunciation. It is possible. लेकिन भगवान बताते भी हैं समाधान कि अभ्यास और वैराग्य से मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, संभव है. And we can see it by our own experience that when the mind is controlled, we are naturally very, very peaceful, very happy, practicing devotional service. And when mind takes over us, mind controls us, we cannot even sit in one place for more than 2 minutes. It's pulling us hither and thither. It's punishing us left and right, hitting us left and right. हम लोग खुद इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं. जब मन हमारा नियंत्रण में होता है, शांत तो कितना शांति हम अंदर से महसूस करते हैं. और जब मन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, तो हम एक जगह पर 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं. See, on our own, we cannot control the mind. अपने आप में खुद से हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते अपने प्रयास से. Not possible. संभव ही नहीं. But when the Lord sees that a sincere devotee is trying his or her best, Krishna personally comes to help that devotee. लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त बहुत ही सिंसियरली, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहा है उसको नियंत्रित करने का, तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं. Prabhupada talks about this, about the story of that bird in Bhagavad Gita's, in one of the purports. Remember that there's a small bird whose eggs were taken by the waves of the ocean.
प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टोरी कोट करते हैं, मतलब कि एक छोटी सी जो चिड़िया है जो समुद्र में उसके अपने अंडों को बचाने का प्रयास कर रही है। So he requested the ocean to please give the egg back. But the ocean was thinking, a small bird just totally neglected the request of the bird. तो ये चिड़िया जो है वो सागर से अनुरोध कर रही है, मेरे बच्चे वापस कर दो, अंडे वापस कर दो, पर सागर बोलता है तुम इतनी छोटी सी चिड़िया, तो उसको निगलेक्ट कर दिया समुद्र ने। So then the bird said, if you don't give my eggs back, I will drink all your water. I will suck all your water. I'll dry you up. You're the ocean. I'll dry you up. You will have no more existence. तो चिड़िया ने बोला ना प्रभु जी, तो चिड़िया ने बोला कि तुम नहीं दोगे तो मैं इसको सारे तुम्हारे पानी को सोख लूंगी, पी जाऊंगी। The ocean laughed because a small bird is saying he will dry up the ocean. He just laughed. तो समुद्र ने तो बिल्कुल उसको हंसने लगा उस चिड़िया की इस बात पर कि तुम छोटी सी चिड़िया, तुम क्या कर सकती हो। So the bird went and he started taking one drop of water, coming and putting it on the sand. One drop after another drop. He was thinking that this is how I'm going to punish the ocean. But he was determined, I'm going to do it. तो चिड़िया अपने पूरे प्रयास से एक एक बूंद सागर की वो अलग करके फेंकती जा रही थी, और इसी उसका उद्देश्य क्या था कि सागर को पूरा खाली कर दे। Not only the ocean laughed, but everyone else laughed too. सभी, सागर ही नहीं, सभी कोई हंस रहा है प्रकृति में। But the news spread all over that a small bird is trying to dry up the ocean. समाचार पूरे संसार में फैल गया कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र को खाली करने में लगी हुई है। Garudev heard that one of my family members is trying to achieve something which is impossible. और ये समाचार गरुड़ जी को मिला तो कि मेरे परिवार में, पक्षी परिवार में कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि समुद्र को खाली करने में। So Garudev came to help the small bird and told the ocean, if you do not give the eggs back, then what my small brother or sister, I don't know, whoever has taken that vow, I will take that responsibility and I'll dry you up. So give the bird her egg back. तो गरुड़ जी अपने छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए समुद्र के पास आए, बोला अगर तुम नहीं दोगे ना इस चिड़िया के बच्चों को, तो मैं तुम्हारे सारे सागर को, मैं तुम्हारे पानी को सुखा दूंगा। So the ocean gave back the eggs. तो इस तरह से समुद्र को समझ में आ गया और उसने वो चिड़िया के बच्चों को वापस कर दिया। Similarly, Mama Maya Durattaya, Krishna's Maya is extremely difficult to overcome. But if one surrenders to Krishna, things becomes quite easy. वैसे ही भगवान की माया है, बहुत मुश्किल है उसको पार कर पाना, लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो बहुत आसानी से उसको पार कर सकते हैं। But somehow or other, we have to make sure that we understand the process of controlling the mind. लेकिन किसी तरह से हमें ये सीखना है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रण कर पाएं। See, Prabhupada named our society as the International Society for Krishna Consciousness. प्रभुपाद जी ने हमारी सोसाइटी का नाम रखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। So it's very clear, right? The day you joined, you have joined
Krishna consciousness means the best way to control the mind is through Krishna consciousness. तो बहुत डे वन से ही, फर्स्ट दिन से ही हमें पता होता है कि हम यहाँ पर आए हैं अपनी कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए. So now we will discuss about certain practical points that we can apply in our life that will help us to control the mind. कुछ व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल टिप्स प्रभु जी अब देंगे आपको कि जिससे हम आपको बताएं कि मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं. The first thing is association. पहला जो स्तंभ है इसका कि भक्तों का संग, एसोसिएशन. You know, there is certain type of bird that could copy certain words of the humans. तो चिड़िया होते हैं जैसे तोता, ये सब जो कोई मनुष्य बोलता है उसके शब्दों को कॉपी करके बोलने लग जाते हैं. They can say Hare Krishna, Hari Bol, welcome, sit down, bye-bye. I have seen that they can actually copy quite nicely. या बहुत चिड़िया हैं जो ऐसे हमारे शब्दों को बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं. So there was a bird. You said tota, right? या तोता. So tota bird was living with the sadhus in the forest. तो ये तोता एक साधु के साथ रहता था जंगल में. So certain other devotees came to the hermitage of that sadhu. एक दूसरा भक्त एक था, वो साधु के आश्रम में आया एक बार. As soon as this devotee came to this ashram, the tota bird began to say, welcome, welcome. जैसे ये साधु आया आश्रम में, तो ये तोता था तुरंत बोलने लग गया, स्वागत है, वेलकम. Please sit down, sit down. बैठिए महाजन बैठिए. The sadhu was very surprised. Look at this tota, he's welcoming me, asking me to sit down. He was very, very happy, very pleased. साधु बहुत खुश हुआ है सुनकर. Then, after some time, he went to another person's house. He also had a tota. कुछ दिन बाद वो साधु दूसरे एक साधु के पास घर पे गया. नहीं, साधु नहीं, एक नॉर्मल आदमी का घर में गया. तो ये साधु एक दूसरे घर में गया, उसके घर में भी एक तोता था. And that bird began to say, catch him, beat him. तो वो जो तोता था वो बिल्कुल विपरीत काम बोल रहा है. वो कह रहा पकड़ लो इसको, पकड़ लो, मारो. Sadhu was thinking, what's going on? I went to the other person's house and that tota said, welcome, sit down. And this tota is saying, catch him, beat him. साधु समझ नहीं पा रहा था, है एक ही परिवार से, दोनों तोता ही हैं, लेकिन ये कह रहा है मारो, पकड़ो, और दूसरा बोल रहा है बैठो, स्वागत है. So this sadhu asked his Guruji, say, what's going on? How come there is a difference? तो ये पूछा ये प्रश्न साधु से कि कैसे हो पाया ये, क्या कारण है इसका. So Guruji said, it is the association. The first house that you went to, the tota was associating with the sadhu. And the second house, the tota was associating with the dacoit. तो ये संग का प्रभाव है कि एक जो तोता था साधुओं का संग कर रहा है और दूसरा वो डकैतों और चोरों का संग कर रहा है. So we are like the tota. We are like the tota bird. हम भी बस तोता पक्षी की तरह ही हैं. So if we associate with people whose mind is not controlled, very flickering mind, he was not interested in Krishna consciousness. If you associate with them too much, you will develop that nature.
अगर हम ऐसे लोगों के साथ संग करेंगे जिनका मन एक्चुअली हमेशा विचलित रहता है, फ्लिकरिंग रहता है, तो हमारा भी हम भी वैसे ही हो जाएंगे हमेशा I'll give you one example. There are certain devotees, whatever they get, first they offer to Krishna and then they accept. And then there is other devotees, whatever is there, they just eat. So you will see your nature will change depending on whom you are associating. कुछ भक्त हैं जो कुछ भी होता है, कुछ भी खाने से पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं। कुछ होते हैं जो भी आता है बस आने दो, ग्रहण कर लेते हैं। There's music, right? There's Hindi cinema songs. So if you associate with a person who is always listening to all these karmi songs, if you spend too much time with them, you go to their house, you sit down, and he's always listening, and slowly, you'll also develop a taste for listening those songs. But if you associate with someone who is always listening to kirtan, then you'll also develop that taste to listen to the kirtan all the time. अगर आप ऐसे घर में जाते रहोगे रेगुलरली जहाँ पर सिनेमा सॉन्ग्स बज रहे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी वो टेंडेंसी आ जाएगी। और आप एक दूसरे घर में जाते हो जहाँ पर भजन कीर्तन बज रहे हैं, चल रहा है, तो आप हमें नेचुरली आपके अंदर उसी तरह का म्यूजिक सुनने की भावना आ जाएगी। So association plays such an important role as far as us controlling the mind is concerned. इसीलिए संग बहुत बड़ा रोल निभाता है, हम क्या बन जाएंगे उस पर। So today you should think whom you are associating with, whom you are spending time with. इसीलिए बहुत गंभीर होने की बात है, इस बात पर विचार करिए कि हम किसका संग कर रहे हैं। If you are interested in controlling the mind, then you have to make sure that you are in the right association. अगर आप वास्तव में ये चाह रहे हो कि आप अपने मन को नियंत्रण करना है, तो आप जिसका संग कर रहे हो बहुत केयरफुल हो जाइए। Second thing that we want to emphasize is associating with Srila Prabhupada through his books. दूसरा जो सबसे मुख्य अंग है कि हम साधु संग करें प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़कर। You know that Prabhupada used to read his own books every day. क्या आपको मालूम है प्रभुपाद जी खुद अपनी किताबें पढ़ते थे? Prabhupada said in 1974 in Bombay that I read my books every day because I am learning something new, newer things every day by reading my own books. प्रभुपाद जी 1974 की बात है बॉम्बे में, तो वहां पर बताया उन्होंने कि मैं खुद अपनी किताबों से सीखता रहता हूँ दिन पे दिन। Why I am learning something from my own books? Because these books are not written by me. मैं क्यों ऐसा मुझे नया सीखने को मिल रहा है अपनी किताबों से? क्योंकि ये किताबें मैंने खुद नहीं लिखी। Every time I sit to write, Krishna personally comes and he dictates me what to write. जब भी मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो हर बार भगवान स्वयं आकर मुझे प्रेरणा देते हैं लिखने के लिए। So Krishna's words are nectar, but when it comes out through a pure devotee, is even more nectar. भगवान के शब्द तो अपने आप में ही अमृत हैं, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त के मुख से निकलते हैं तो और अमृत हो जाते हैं। So by reading Prabhupada's books every day, you are actually associating with Srila Prabhupada and the Supreme Lord. That will purify our heart. हर दिन श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो भगवान हमारा हृदय में हमको शुद्धता प्रदान करेंगे। So if you are into controlling the mind, reading Prabhupada's books every day is a must. इसीलिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना हमारे मन को नियंत्रित करने का बहुत ही बेहतरीन उपाय है। And the third thing, another very, very important factor
Okay, so first we talked about association. Second thing, we talked about reading Prabhupada books. And the third thing is our mind control will depend on what type of prasad we take. तीसरा स्तंभ है हमारे मन को नियंत्रित करने का कि हम किस तरह का भोजन, किस तरह का प्रसाद लेते, किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं. You know, before you go to bed, you take small amount. You see the small amount? Take a small amount of what's going on? What is this? Someone actually just let me. Yeah. Okay. Yes, bro. Okay. So before you go to bed, if you eat small amount of rice, dal, sabji, pakora, you know, cake, rasmalai, and aloo tikki, whatever you call in Bihar, that famous food. You take all that before you go to bed. That's definitely not helping you controlling the mind. अगर आप सोने के पहले आप अपने सारे जो देसी व्यंजन हैं उनका मेनू अगर आप लेकर सोओगे तो फिर मन को नियंत्रित करना बहुत दूर की बात है. Krishna says this in the Bhagavad Gita in the 17th chapter, that eating habits plays a very important role in our life. प्रभुपाद जी ने बताया गीता में बहुत स्पष्ट कि हमारा जो खाना है जो हम वो हमारे मन को नियंत्रित करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. So if you are interested to progress in Krishna consciousness, if you're interested to make sure the mind is controlled, then we also have to control what we take, what type of prasad we take. इसलिए हम किस तरह का प्रसाद ग्रहण करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मन को नियंत्रित करने में. See, in the beginning of Krishna consciousness, yes, you can eat up to your neck, no problem. But as you progress, you understand, and you take the right amount at the right time. शुरू में जब हम भक्ति में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक ले सकते हैं, अखंड भोजन कर सकते हैं. धीरे धीरे हमें समझदार हो जाना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करना चाहिए. And of course, the Yuga Dharma of this age is the holy name. Always constantly chanting Krishna's holy name through the Hare Krishna Maha Mantra will help us to control the mind. तो जो संकीर्तन धर्म है हमारे इस कलयुग का, भगवान का नाम लेना, तो वो हमेशा हमारे मन को नियंत्रित करने में लाभकारी है. It's very interesting. Prabhupada in the Bhagavatam describes the mind to a small child. प्रभुपाद जी ने मन को एक बच्चे से तुलना किया है. You see how the child acts? Very flickering, always asking for this and that, always asking question, always asking something, always wanting something. Very flickering mind. हम सब देखते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे हर समय वो बहुत ही चंचल रहता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी कुछ पूछता है, कभी ये पूछता है, तो हमेशा फ्लिकरिंग रहता है. But the parents knows how to control the child. बट माता पिता को पता होता है बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है. Sometimes the child wants something and the parents immediately gives. Sometimes the child wants something and the parent says no. No means no. And slowly the child learns what he can expect, what he cannot expect. कभी-कभी तो हम बच्चे मांगते हैं माता पिता से, तो माता पिता दे देते हैं, और कभी-कभी बोलते नहीं. तो इस तरह से धीरे-धीरे बच्चा सीख जाता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. So through intelligence we have to control the mind. तो ये हमें बुद्धि से मन को नियंत्रित करना होगा. Sometimes the parents ignore the demands of the child because the parents know that demand is harmful to the children. कभी-कभी माता पिता बच्चे की जो उसकी मांगे होती हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं, ताकि वो
इग्नोर करना भी उससे उसका कंट्रोल होगा। So Prabhupada says one of the best way to control the mind is to ignore the demand of the mind. तो प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं कि ये भी एक बहुत उत्तम उपाय है मन को नियंत्रित करने का कि हम उसको निग्लेक्ट कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें। One of our acharyas, it describes that to the uncontrolled mind, when you wake up, you beat him with shoes and broom. तो ये भी हमारे आचार्य बताते हैं कि एक अनियंत्रित मन को कैसे कंट्रोल करना है। उसको सुबह उठ के पूरा झाड़ू से उसकी पिटाई करो। See, mind is like an animal. मन एक जानवर की तरह है जो अनियंत्रित है। Have you seen circus? आप सबने क्या सर्कस देखा है? देखा है? Yes, yes. Raise your hand if you have seen circus. रांची में सर्कस है अभी? अभी तो प्रभु जी आई डोंट थिंक सर्कस का इतना कल्चर है, लग रहा है। लेकिन नॉर्मल टाइम में सर्कस उधर आता है रांची में? मुझे रांची वालों से पूछना पड़ेगा, अभी तो मैंने नहीं देखा। रांची वालों उधर आते हैं, सर्कस होता है उधर? चैट बॉक्स में डाल दो, आता है। आते हैं, बोलने आता है। So you'll see that in circus, dangerous animals like tiger and lions, they're also showing so many games. They're jumping, they're going through the fire, like that. तो आप सर्कस में देखते हो कि उसमें एक से एक खतरनाक जानवर भी, शेर, चीते, वो भी गजब का करतब दिखाते हैं। So you're going to the circus to see the lion play a game. Now, if you go to the forest of Jharkhand and you happen to meet a lion and you say, Mr. Lion, I have seen one of your friends did a play in the circus. Can you show me some games? You think that he will show you game or he will eat you alive? तो आप अगर शहर में सर्कस देख के आप झारखंड के जंगल में जाते हैं और वहां अगर आपको शेर दिखता है तो आप उससे आके शेर से ये बोलते हो कि आपको मैंने देखा है सर्कस करते हुए रांची में, तो आपको लगता है वो आपको वहां सर्कस दिखाएगा, आपको खा जाएगा वो। That dangerous animal is trained in the circus to play some games. Therefore, similarly, the mind which is compared to dangerous animal can be also trained. जिस तरह से ये जो जंगली जानवर है शेर, वो सर्कस में, सोचिए सर्कस में वो करतब दिखा सकता है, तो वैसे ही मन हमारा जो बहुत ही रिबेलियस है, जानवर की तरह है, वो भी हमारे द्वारा कंट्रोल हो सकता है। यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्. It is the nature of the mind. So you are sitting in the class now, and your mind could be in your home, or your mind could be thinking what I'm going to take prasad today, what's going to happen tomorrow. And you're sitting here, but your mind is everywhere. But it is the duty of an intelligent person to bring the mind back to where it's supposed to be. ये जैसे हम सब यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन हमको बाहर लेके जा रहा है कि हमारा लंच में क्या होगा, कल क्या करूंगा। तो ये बुद्धि का जिम्मेदारी है कि मन को वापस वर्तमान में लेकर आए, क्लास में लाए। So we know how difficult for us is to sit in a place and chant 16 rounds. It's almost impossible. You chant 2 rounds, the mind says, why are you sitting down? You can walk around and chant. Then you start walking, and then the mind says, oh, why are you walking in the temple? Let's go out, see the nature, and just walk. You'll get to do your walk and also finish your rounds. Every time you sit to chant, mind tricks you. तो ये हमें पता है, हम सब रोज का अनुभव है। 16 माला जब हम करने बैठते हैं
दो माला हुआ नहीं कि मन बोलता है थोड़ा खड़े होके जप कर लेते हैं, खड़े होके जप करते हैं मंदिर में, तो मन बोलता है अरे मंदिर के अंदर क्यों चल रहे हैं, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा नेचर को, सुंदरता को देखते हुए थोड़ा जप कर लेते हैं। तो कितना मुश्किल होता है जप करना। And because of the nature of the mind, and because we have become servant of the mind, it is almost impossible to sit and chant good rounds. जो नेचर का, ये मन का जो प्रकृति है, इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए बैठ के जप करना। Therefore, we have to find a way to control the mind. Otherwise, we are lost. We are lost. इसीलिए हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा मन को नियंत्रित करने का, वरना हम सब खो जाएंगे इस भवसागर में। And we cannot progress in our spiritual life without controlling the mind. आध्यात्मिक जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर अपने मन को नियंत्रित ना कर सकें। Therefore, here, as you know, we heard that mana eva manusyanam karanam bandha moksha. Mind is the cause for our bondage, and mind is the cause of liberation. इसलिए हम इस गीता में सुनते हैं कि मन ही हमारे बंधन का कारण है, तो मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। One of the best way of controlling the mind is to sit and to kirtan together. बेस्ट ये भी एक उत्तम उपाय है कि हम भक्तों के साथ बैठें और मिलकर संकीर्तन करें। And another thing, one thing is to sit and chant, do kirtan. Other thing is to dance in the kirtan. It plays a very important role as far as controlling the mind is concerned. एक तो हो गया आप बैठ के भक्तों के साथ जप करें, दूसरा कीर्तन में आप डांस करें, नृत्य करें। And after the kirtan, you sit together and honor nice prasadam. That is also a very important role, plays a very important role in controlling the mind. कीर्तन करने के बाद सब मिलकर एक साथ भक्त प्रसाद ग्रहण करें, ये भी नियंत्रित करने का उपाय है। Don't go to your room and stand in one leg with your hand raised, with, closing your eyes and trying to control the mind. It's not going to work. It's not going to work. कमरे में जाके एकांत में आपको कोई आसन करने की जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर करके मन को नियंत्रित करने के लिए, ये नहीं काम करेगा। Krishna has given the process. Follow the process of Krishna and we'll be successful. भगवान ने हमें उपाय दिया है गीता में, उनका ही उपाय हमें फॉलो करना पड़ेगा। And the Yuga Dharma of this age is the holy name. It's Maha Mantra. It is the most powerful weapon to control the mind. और इस युग का धर्म है कि भगवान का महामंत्र को आपको लेना, महामंत्र करना, ये सबसे मुख्य उपाय है मन को नियंत्रित। I know the devotees of Ranchi, all of you are great devotees, fully controlled mind. All your minds are fully controlled. रांची के भक्त प्रभु जी कह रहे हैं कि सब बहुत मन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। Please chant and dance, take prasad, be happy. You try to help others in their Krishna consciousness. By that also, it helps to control our mind. आप सब लोग अपना जीवन, आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, प्रसाद पाकर, तो उसी तरह से आप दूसरों को भी मदद करिए इस प्रोसेस को लेने के लिए। Call it aloo choki, right? Aloo choki? आलू चोखा। Aloo chokha. Okay, and take aloo chokha prasad. आलू चोखा प्रसाद मत भूलिएगा। Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I see a lot of devotees here in the Zoom. 118 devotees are there listening. So I offer my respects to all of you. If there is any question, we can take questions only about controlling the mind. तो भक्तों के प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न पूछिए प्रभु जी से,
मैं अनम्यूट, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं आपको चांस दूंगा. संगीता माता जी इज देयर एंड सम ऑफ आप में से कुछ अगर चैट बॉक्स में भी लिखेंगे तो मैं उनको पढ़ लूंगा. तो वी हैव आल्सो प्रभु जी डिवोटीज फ्रॉम देहरादून आल्सो. तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी देयर आल्सो, तो सम ऑफ देम दे हैव जॉइंड. आप हिंदी में पूछ सकते हैं कोई बात. हाँ ठीक. सो संगीता माता जी अनम्यूट हर. हाँ कर दिया, अनम्यूट कर लो. म्यूट नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है. अभिजीत प्रभु आप पूछिए. So, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Abhijit. So, Prabhuji, I have a question. Whenever we think that we will think in a positive direction, why our mind always think in a negative direction? Why always our mind think into negative sides? Why not into the positive sides of ourselves? Thank you. It's अब हिंदी में बताएंगे प्रभु. तो मन, प्रभु जी पूछ रहे हैं अभिजीत प्रभु कि मन हमेशा जब हम पॉजिटिव साइड में सोचने का प्रयास करते हैं, हमें नेगेटिव साइड में क्यों ले जाता है? See, the first thing we discussed, one of the first thing we discussed about how to control the mind is association. पहला जो चीज बताया था हमने कि मन को नियंत्रित करने का उपाय भक्तों का संग करना. So we have been associating with the material nature for thousands and millions of years. हम लोग इस भौतिक प्रकृति का संग कर रहे हैं लाखों लाखों जन्म से, लाखों लाखों सालों से. Because of our association with the material nature, because of our intense desire for millions of lifetime to be the servant of the mind, and now we want to change. See, for millions of lifetime, we've been serving Maya, not Krishna. And now we want to change. So this change that we want to do now, it's not going to come easy because of our history. हम लाखों लाखों जन्म से हम भौतिक प्रकृति का संग कर रहे हैं और उनकी दासता में रह रहे हैं. तो अचानक अगर हम भक्ति करना का प्रयास करेंगे तो इतना जल्दी सडन नहीं होने वाला. It will take time. But the devotional service is extremely powerful. लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत ही शक्तिशाली है. I give you one example. See, today is Sunday. आज Sunday है. You could be watching a movie, right? But you're not watching a movie. You're sitting here listening to the class. And while you're sitting here, your mind is telling you so many things. But you're saying, नहीं अभी प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, इधर बैठना है अभी किधर नहीं जाना है, जाऊंगा. Mind is telling you so many things, and you're saying जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाऊंगा. एक प्रश्न है, पूछना है प्रभु जी से. So you see, you are fighting with the mind. The process has started. Mind is telling you something, sometimes you listen, sometimes you say, no, shut up, I'm not listening to you. I'm in the class right now. I'll listen to you, Mr. Mind, but a little later. Abhi nahi. So this is a very good start. Previously, anything mind says, you jump. Fight with your parents. You start fighting with your parents. Now, something happens, you tell your mind, Hari Bol, I have become a member of ISKCON now. I'm not your servant. I'm a servant of Krishna. I'm not your servant. So if you want something, be logical. Mind is not logical. Just like Prabhupada said, the child, he is thinking so many things, saying so many things. He's not thinking in that sense. But a devotee starts telling the mind, I am sorry, I'm not your servant. So when you tell me something,
think 10 times. Ignoring the mind like that. So I'm saying because of our history, every time you try to control the mind is trying to fight back. Madhusudan Prabhu, you can say in brief what I said. तो प्रभु जी ने कहा कि अभी जब हम ISKCON से जुड़ गए हैं तो और आज संडे का समय है, आप चाहते तो आपके पास ऑप्शन था, आप मूवी देख सकते थे, बाहर दोस्तों के साथ घूम सकते थे, बट आप यहाँ पर बैठ रहे हो, तो आप क्या, आप धीरे धीरे आपके अंदर मन को निग्लेक्ट करने की काबिलियत आने लग गई है, सही चॉइस आप में करने लग गए हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप और भी ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। So don't worry, I'm very happy that you are thinking like this. So the fact that you are thinking, that means you have, the process has already began as far as controlling the mind is concerned. तो आप धीरे धीरे सोचने लग गए हो इस बारे में, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे मन को नियंत्रित करना है। All right, next. So Sugato Prabhu, yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dandavat pranam, Sugata Kundu Prabhuji. Boliye. Prabhuji, I have a question that the first thing for controlling our mind is association that we can do in online mode. And the second thing is Sankirtan as well as taking prasadam. So in the COVID pandemic situation, so maximum time it is not possible to go any center to take prasad, or I am very close to my Mayapur center. So just 3 hours distance. I live in Belgharia, Kolkata. So, but if there any possible thing to food delivery service, anything around the every pin codes in India, so that will be very much helpful for every devotee all over India who are joining by online mode, and so to control our mind. You know, it's very interesting what you said. I feel that this COVID has taught us many, many things. And I tell you, to be very frank, I think devotees are becoming more Krishna conscious during the COVID than before the COVID. Because I feel during the COVID, there's so many online courses, online classes, so much association. During the COVID, I feel the association of devotees is more than before the COVID. And as far as the prasad is concerned, certain temples I have noticed, they started this new thing. Just like in Durgapur, ISKCON Durgapur has started this new system that a devotee can order online, and another devotee from the temple, he goes to the motorbike and delivers the prasad at their homes. So I'm sure Madhusudan Prabhu is listening to you, and he'll start something like this in Ranchi. And Yes, I think Prabhuji. every temple should do this. This is a very good proposal, what Sugata is saying. And I have seen certain temples have started this thing. Now he's saying this, I'll mention this to the Calcutta temple management. This is a very good opportunity to reach out. Even I think by this process, non-vegetarian will become vegetarian. Yes, yes. Not only vegetarian, they will start to take prasad also, you know. It's a very good thing. And right, exactly, I think it's very interesting, like you said, that, okay, you cannot go to the temple, but you can still get the association through online classes and things like that. And reading Prabhupada books that you can do, but sometimes, you know, especially if you are alone at home or you are in the base, there's only 10 or 12 devotees, at least some association is there. But I know many devotees, you know, they want to take some temple prasad. So this is a good thing. I know some temples have started. I'll definitely encourage other centers to pick this up. I think it's a very good thing. देहरादून में प्रभु जी अभी एक हरे कृष्णा किचन चालू हुआ है, and here also हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको करने का। Okay, you were in Calcutta, Sugata? Yes.
Yes, Prabhujee, 783 pin code, Belgharia. Next time you come to Mayapur, you can take some extra prasad because you have been starving for a long time. So you can try to eat up to your neck and then try to take some couple of bags of prasad so you can continue taking it. But I tell you, this is so true because we are used to certain things, no? We're used to going to the temple every Sunday, doing program, chanting and dancing with devotees, festivities and all that. Suddenly this corona comes, oh, you cannot do this, you have to wear mask, you cannot 6 feet distance and this and that, oh, now it's lockdown. It becomes quite uneasy. So I'm really hoping, like I wanted to come to Ranchi, but I couldn't come because of the corona. So I'm really hoping that things will. I think phase 1 is gone, phase 2 is gone. Right now dealing with phase 3 of corona. I'm really hoping that phase 3 will be the last phase. We don't have to see any more phase. We have seen too many phases of corona. Now I'm hoping things will be normal so we can go on with our spiritual life. But thank you for the suggestion. It's very nice suggestion. So thank you. Jai Shankar Prabhu. जी सर, हरे कृष्णा प्रभु। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में जैसे आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारा काम करना पड़ता है और उसी में आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रभु की शरण में भी जा करके हमको जो है उनका भजन कीर्तन करना है, तो दोनों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करें। कभी कभी इसको भी लेकर के तनाव उत्पन्न होता है कि जैसे भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो इच्छा करती बहुत देर तक करें, फिर ये रहता है कि भाई और भी सारे काम करने हैं, तो दोनों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित करें। Hare Krishna Prabhu. I'll ask you one question. You can kindly answer. See, a businessman, he spends a lot of time in business. A student, he spends a lot of time in studying. Someone who does a government or a private job, he spends a lot of time in doing the government job. Can you tell me why? So, for livelihood, sir. For livelihood? For livelihood, yes, sir. Thank you. This is my point. You're working 8 hours a day for maintaining your livelihood for this lifetime. Yes, sir. So you are investing 8 hours a day. Yes, sir. Students are investing almost 20-25 years of their life for education so they can earn to take care of themselves, so they can secure their future, which is 30, 40, 50 years. And then all your future is gone. All your bank balance is gone. All your home, car, everything is gone because we are dead. So my point is that if we can invest every day 7 to 10 hours a day for studying, for doing job, for our business, why we cannot invest some hours that will secure our future for eternity? Yes, sir. So if you understand that, then, like there is a saying, if there is a will, there is a way. Yes, sir. You will find a way to balance your life between your, life that you have to spend for earning and then devotional life. Madhusudhan Prabhu, आप थोड़ा अनुवाद कर दीजिए। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया जय शंकर प्रभु का कि हम कैसे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनाएं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया कि जिस तरह से हम अपने बिजनेस चलाने के लिए और गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, अपना 8 से 10 घंटे पूरा टीडियस वर्क हम करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? अपने लाइवलीहुड के लिए, अपना फ्यूचर जीवन सिक्योर करने के लिए। तो आप 20 से 25 साल
अपने जीवन का पढ़ाई करते हो, इतना टाइम देते हो आगे के 35-40 साल जीवन यापन करने के लिए, तो क्या हम अपना कुछ समय, कुछ घंटे नहीं दे सकते हैं अपने फ्यूचर लाइफ को सिक्योर करने के लिए? तो ये बहुत ही सुंदर आंसर है प्रभु जी ने दिया। और जय श्री कृष्ण, धन्यवाद सर, सिया राम प्रभु। हाँ, नहीं, Madhusudan Prabhu, I want you to repeat. Yes. That there is a famous saying that if there is a will, there is a way. तो इसीलिए अगर हम वास्तव में भक्त बनना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर कहावत है कि जहाँ चाह है वहां राह निकल आएगी। तो आप सब अगर चाह रहे हैं कि मुझे अपना जीवन फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि हम जैसे ही खत्म मर जाते हैं वैसे हमारा सारा जो इन्वेस्ट किया हमने इस जीवन पे सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियस में इन्वेस्ट करोगे तो आपका हमेशा सिक्योर रहोगे। तो इसलिए चाह है तो राह निकलेगी। Why do you feel the students before the exam they're staying up all night and studying? Because they want to do something, they want to do good in their results. So there is a will, and therefore there is a way. They'll find a way. They'll find a way. If you are desperate to progress, you'll find a way. जैसे बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए रात भर पूरा पढ़ाई करते रहते हैं, जगते रहते हैं। तो चाह होगी तो हम भक्ति भी कर सकते हैं अच्छे से, पर चाह निकालिए, वो चाह बनाइए। One other thing I wanted to say is that in our line of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, see, most of our acharyas, they were grihastas. Go ahead, Madhusudan. Last ka Prabhuji thoda I skipped actually, I could not hear. I'm saying that most of our acharyas in our line, they were grihastas. Okay. So हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनमें ज्यादातर वो गृहस्थ थे। And they balanced it beautifully about carrying out the responsibilities as a grihastha and as far as Krishna consciousness is concerned. और वो सब बहुत ही एक्सपर्ट थे अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को संतुलित करने में। All right, next. सियाराम प्रभु, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरे को ये कभी कभी अक्सर मैं देखता हूँ कि जब हम लोग घर में आरती या कीर्तन वगैरह करते हैं, आर यू ऑडिबल सर? यस बोलिए। जब हम घर में कभी आरती या कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, कुछ देर तो नॉर्मल चलते रहता है, ये बीच में फिर दोनों मन में अलग विचार भी आ जाते हैं, कीर्तन भी चलते रहता है। कभी कभी ये अक्सर मैं देखता हूँ कि हम दोनों साथ साथ चलने लगता है। इस तरह के विचार क्यों मन में आ जाते हैं? इस तरह इसको हम कैसे रोक सकते हैं? I couldn't hear him properly. Madhusudan Prabhu, can you repeat in English? मतलब यही कह रहे हैं कि घर में हम कभी कभी आरती भजन करते हैं, कर रहे होते हैं, हाँ आरती भजन कर रहे होते हैं, तो अचानक गलत विचार भी आ जाते हैं। कहीं दूर की बात, दूसरी बातें मन में उत्पन्न होने लगती है, मैं सोचने लगता हूँ, मेरा मन वहां पर दौड़ जाता है। His mind goes from the arti and here and there. So that is the business of the mind. ये काम है हमारे मन का, हाँ यही तो मन का काम है, इधर उधर ले जाना। Till the mind is fully controlled, till the mind becomes your friend, it is the business of the mind to distract you all the time. जब तक मन हमारा नियंत्रण में नहीं होगा तब तक ये काम ही है मन का कि वो हमारे मन को इधर उधर ले जाएगा। And therefore it is very important, like Prabhupada says, just like sometimes you ignore the demand of your child who is a baby. You know, he wants to touch the fire. He wants to run here and there. He wants to do so many naughty things, but the parent says no. So you ignore the demand of the child. Prabhupada says similarly, when you are sitting down to chant, you just began to chant and your mind says, you know, last night you didn't have 7 hours, 8 hours of sleep. So why don't you sleep for another
1 hour, then you will feel fresh to chant. So mind is tricking you. See, right away mind is tricking. So at that time, you're supposed to say to the mind, Hare Krishna, I am chanting right now. I'm not listening to you. So you please sit down here and you chant. That's it. I do not want to hear anything from you. So one of the best way Prabhupada says to control the mind when you are trying to do something and the mind is going hither and thither, you be very strict with your mind and you ignore the demand of the mind. मन को नियंत्रण करना मन का सबसे अच्छा उपाय यही है. जैसे बच्चे को हम निग्लेक्ट करते हैं, वैसे मन को आप निग्लेक्ट करिए, इग्नोर करिए इसको. And like I give the example of the lion, if you keep on doing this, then you'll see the mind will become very close friend to you and will do wonders in your devotional life. तो जैसा प्रभु जी ने उदाहरण दिया था शेर का, उस उदाहरण को भी अगर आप फॉलो करेंगे आप इसको समझ सकते हैं. संजीव प्रभु. Okay, we'll take last question, okay? Yeah, I think there are many questions they have asked in the chat, so maybe some of questions from the chat also we can take. Prabhuji, if you allow. Okay, go ahead. Guru, one question from the audience actually, if you can take, and then. I try to chant at least 4 times at morning and 1 times at bedtimes. In spite of this, sometimes I deviate how I control at that time. All right. So the point is that, like I said, it is the nature of the mind to deviate. Every time you try to take a positive, you try to take positive steps towards devotional life, the mind will try to deviate. So the best practice for controlling the mind, as we talked about, is right association, reading Srila Prabhupada's books, always taking shelter of the holy name, and taking prasadam, honoring prasadam. So in the beginning stage, even in the higher stage of devotional service, mind will keep on deviating. But we have to fight back. And the strength you'll get through association. Keep on trying, keep on trying. How can we correlate mind, man, and atma with each other? See, naturally, Jiber Surupay Krishna Nityadas. They actually naturally, they're all together in serving Krishna. That is our eternal position. But because of our contact with the material nature, then the different senses are acting very independently and driving us nuts, driving us crazy. The tongue is going here and there. The touch wants to touch so many things. The nose wants to smell so many things, nice things, which is not related to Krishna, and is driving us crazy. And Prabhupada says in the Bhagavatam and also in the Bhagavad Gita, in different purports, that somehow or other, if we can control the mind, then all other senses will come under control. And the most important part by which all our senses could be controlled is trying to engage our senses in Krishna service. Yukta Vairagya Muchyate. Yukta Vairagya means engaging our nature, engaging our senses in the service of Krishna.
Anything else? Or the Hindi you have to read? तो क्वेश्चन है कि गृहस्थ होने के साथ आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ की जिम्मेदारियों के बीच समय निकाल पाना किस प्रकार संभव है, किया जा सकता है, जिससे कि परिवार के प्रति कर्तव्यों का भी निर्वाह हो जाए, प्रभु भजन भी हो सके? Prabhu Bhaktivinoda Thakur says, Manasa deha geha jo kichu mor or pilu tua pade nand kishor. যেদিনে আমার গৃহতে দেখি গৃহেতে গোলক ভাই, Bhaktivinoda Thakur uses the word, he says his house has transformed into Golok Vrindavan. So if you think your house is your house, it's going to be very, very difficult. But if you see your house as a house of Krishna and as a temple of Krishna, and your wife and children, everyone is servant of Krishna, they're all related to Krishna, then your outlook is very, very different. Another thing Prabhupada says, that when the family members, they chant together, they read together, and they do kirtan together, they honor prasadam together, then atmosphere of that house is transcendental. So the husband, he is out working to maintain Krishna's temple at home, Krishna's family at home. The wife, she is cooking, taking care of the children. She is also thinking this is the temple of Krishna. The members are Krishna's family members. If we put Krishna in the center, then you can balance. Otherwise, if you put ourselves in the center, if self-centered society, there can be no peace whatsoever in a self-centered society. But Krishna-centered society, Krishna-centered home, only happiness can be there. मैं जल्द समराइज थोड़ा सा कर देता हूँ. तो प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि आप अपने घर को आप अपना घर मत समझिए, ये कृष्णा का घर है, कृष्णा का मंदिर समझ के करिए. आप उसके केयर टेकर हैं, और इस भावना से जब आप रहेंगे तो आप बहुत आसानी से आप अपने घर को गोलोक वृंदावन प्रभु का घर बना सकते हैं. नहीं तो वही घर आपके बंधन का कारण बन जाएगा. थिंक डिफरेंटली, कृष्णा को केंद्र बिंदु बनाइए अपने घर का. So I think I think there are questions, but I think प्रभु जी अब समय हो गया है, तो काफी लग रहा है प्रभु जी के लिए. तो I'll come there. When I come to Ranchi, then we can personally discuss, we can do kirtan, we can dance, we can take prasad together. I'm hoping that the corona will go fast so I can come. Yes, Prabhuji, we are very eager to hear your nectarian kirtan. All of us eagerly waiting for you. So please, Prabhuji, make a point, make it in your schedule. फरवरी I think Prabhuji ओवर हो जाएगा हमारा. फरवरी फर्स्ट वीक I think 31st तक restrictions हैं यहाँ पर. So let's see how the situation is. Yeah. So we thank प्रभु जी. बाकी जिनके क्वेश्चंस हैं वो आप बाद में प्रभु जी आएंगे, और ये आप शाम को इवनिंग क्लासेस होती हैं 7 से 8 रोज, आप उस पर ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो हम प्रभु जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं. जो भी डिवोटीज हैं सभी अनम्यूट करके प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम. हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. All right. Hare Krishna. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। राम राम राम। डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे हरे कृष्णा। सो थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू, कृष्णा, जय श्री हरे कृष्ण, जय श्री हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।